हमारी चर्चा से सीखते हुए we'll plan the discussions more carefully. तो आज हम गहसितानि सोमनस्सानि और नेखम्मसितानि सोमनस्सानि मतलब जो प्लेजेंट फीलिंग्स जागती हैं वर्ल्डली सेंस में और त्याग आधारित इन द अदर वर्ल्डली सेंस के उसको उनकी व्याख्या करते हैं और अपनी चर्चा करेंगे डिटेल में उसके बारे में। पहले हम एक बार समझ लें, मैं थोड़ा डिटेल में थोड़ा सा बता देता हूँ। जहाँ तक वर्ल्डली है जो गहसितानी वेदनाएं हैं वो तो शायद हम सबको क्लियर ही है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बेसिकली इसका उनका अर्थ क्या है कि जो इंद्रियां हैं हमारी 6 इंद्रियों पे जो स्पर्श होता है तो वो स्पर्श जो है या तो प्रिय होगा, उसका इम्पैक्ट वेदना प्रिय होगी या अप्रिय होगी या न्यूट्रल। और उस उन्होंने इसमें सिर्फ वही प्रेजेंट की बात नहीं की है, पास्ट में भी अगर कुछ हुआ और उसको हमको याद करते हैं तो मन में उसी तरह की वेदना जाती है। तो द वर्ड यूज देयर इज सोमनस्य। उसका हमने ट्रांसलेशन ठीक से एक सटीक ट्रांसलेशन एग्जैक्टली नहीं था, इसलिए प्रसन्नता कर दिया। एग्जैक्टली इसका मतलब है प्लेजेंट मेंटल फीलिंग, दैट्स द मीनिंग सोमनस्य। सोमनस्य का मतलब है अनप्लेजेंट मेंटल फीलिंग। तो वो मन में अच्छा लगता है, कोई प्रिय मित्र दिख गया, कोई प्रिय भोजन खाने को मिल गया, कोई प्रिय गंध सूंघ ली तो वो अच्छा लगता है, तो उसे कहा सोमनस्य। और अगर कोई अप्रिय पर आरम्भन है, आरम्भन जो हमारा इंद्रिय का है वो प्रिय है, उसका ऑब्जेक्ट अप्रिय है, जो हमारी संज्ञा कहती है अप्रिय है और उसके हिसाब से फिर अप्रिय वेदना जागती है, तो उसको कहा दो मनस्य जाग। और अगर न्यूट्रल है तो उसे कहा कि दुखद असुखद है, तो उसके केस में हम यूजुअली नेग्लेक्ट कर देते हैं, बॉदर ही नहीं करते क्या है। सो इट बिकम्स अ काइंड ऑफ obtuse, we don't even know what's going on, we ignore it because हम we are kind of programmed either to note pleasant or unpleasant, बीच की चीज को हम इग्नोर ही कर देते हैं, तो इसलिए उसको इग्नोरेंस की संज्ञा में डाला गया। तो अभी तो हम सिर्फ सोमनस्य जो वर्ल्डली सेंस में सोमनस्य और जो नेखम्मसिता जो स्पिरिचुअल सेंस में सोमनस्य, तो हमको इसको समझना होगा कि ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है भगवान ने किस उद्देश्य से किया है। इट इज अल्टीमेटली टेकिंग अस टू फुल लिबरेशन, अरहंतशिप की बात हो रही है, कंप्लीट लिबरेशन की बात है। तो उसके लिए सीक्वेंशियल प्लान जैसा बना दिया हमारे लिए कि किस तरह से हम अपनी साधना को प्रगति स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं। तो नेचुरली वर्ल्डली जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उनको ट्रांसेंड करने वाले अदर वर्ल्डली एक्सपीरियंस को हम प्रेफरेंस देंगे, तो वी अंडरस्टैंड दैट इन दैट सेंस। तो अदर जैसे नेखम्मसितानि सोमनस्सानि क्या मुख्य उनका तात्पर्य क्या है उसमें, जो नेखम्म के आधारित है, हमने कहा था उसको ट्रांसलेशन में त्याग आधारित, जिसका रूट जो जैसे अभी चैंटिंग की हमने उसमें रूट क्या था उसका कि जो नेखम्मसितानि है, मैं एक बार से पढ़ देता हूँ। रूपम रूपे मतलब हर एक इंद्रिय के द्वार पे अनिश्चितं विदित्वा, उसको जानते हुए कि अनित्य है, विपरिणाम उसका कंट्रोल नहीं है हमारे ऊपर, और विराग निरोध उसको पुब्बे चैव एतरही च सभ्य मतलब पुराना है या चाहे इस समय का है, उसको यथाभूतम सम्पन्याय पश्यतो, ठीक से जो जैसा है प्रज्ञापूर्वक उसको देख रहे हैं, और उससे जो उपजती सोमनस्सम उसके कारण जो मन में प्रसन्नता का भाव जागता है, मन में सुखद भाव जागता है, उसको कहा गया कि इसको नेखम्मसितं सोमनस्यम कहा गया। वेदम उच्यति नेखम्मसितं सोमनस्यम। तो क्या तात्पर्य हुआ इसका कि अगर हमारे मन में कोई प्रसन्नता इस बात से जागती है कि जो अनुभव हो रहा था वो तो अनित्य था, तो उसके प्रति जो सांसारिक हमारा एटीट्यूड था प्रसन्नता का,
वो अपनी जगह है। अब हम देखते हैं भाई प्रसन्नता तो है लेकिन वो तो अनित्य है और संतोषजनक नहीं है, इट विल चेंज और अपनी प्रकृति के हिसाब से चेंज होगी, मेरा हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जब ये बात सचमुच में समझ में आती है तो उसके चेंज होने पे जो दुख होना होता है वो नहीं होता है। सो वी आर इन द टेंस मूविंग टुवर्ड्स द इनसाइट ऑफ अनिच्चा, तो अनिच्च संज्ञा हमारी पुष्ट हो रही है। तो उस डायरेक्शन पे जो अनित्य संज्ञा के आधार पे जो सुख की अनुभूति होती है किसी भी इंद्रिय द्वार पे, तो उसको हम कहेंगे नेक्खम्मसिता या त्याग आधारित प्रसन्नता कह लें, या मन के अच्छा लगना कह लें। प्रसन्नता को वी अंडरस्टैंड इन दैट सेंस, सो दैट वर्ड इज ए कॉम्पैक्ट वर्ड। तो अभी हम क्या करेंगे भाई, लेट अस विजुअलाइज इन दिस कॉन्टेक्स्ट आवर ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। कल का एक्सपीरियंसेस आए थे वो इस कैटेगरी में नहीं थे अधिकतर। लेकिन कोर्स वन कुड गिव अप सम एडिक्शन, वन कुड गिव अप सम food, one could give up some thought process of particular kind based on other considerations, based on health, based on panya, based on realization कि ये seeking में बड़ा दुख होता है भाई। Those are all valid things, but they are not falling under this category because उससे कोई प्रज्ञा नहीं जाग रही है। एक बहुत लिमिटेड सेंस में, आई मीन थोड़ी तो जागेगी बट लिमिटेड सेंस में, अनित्य बोध नहीं जाग रहा। तो उस यहाँ पे जो कैटेगराइजेशन भगवान ने किया है वो अनित्य दुख अनात्म बोध के आधार पे कैटेगराइजेशन किया है। अनिच्चा दुखा विपरिणाम धम्मा, अनिश्चित बात हो गई, दुख की बात हो गई। विपरिणाम धम्मा का नॉर्मली ट्रांसलेशन होता है परिवर्तनशील है, बट इट एसेंशियली आल्सो मींस कि वो परिवर्तन प्रकृति के नियम के हिसाब से हो रहा है, हमारी इच्छा से नहीं हो रहा। सो वी कैन इंटरप्रेट इट in a more wider sense as not being in my control, so you can interpret that as anatta। तो उस सेंस में, तिलक्षण की सेंस में, अगर हमको किसी भी अपने इंद्रिय जनित अनुभव में त्रिलक्षण का बोध होने लगता है तो देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स त्याग आधारित, मूविंग टुवर्ड्स नेकम्मसितानि सोमनस्सानि। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं निवेदन करूंगा कि हम अपने ग्रुप्स में चर्चा करें उसके ऊपर, और कल वाले जो बच गए थे कल ग्रुप्स में, तो उनके अंदर भी वी कैन रिविजिट देम whatever we did yesterday and see whether they fall in this category or not। और अगर कोई अनुभव हो हमारा जो इस कैटेगरी में ड्रॉ आता हो, then we can bring it out in our main session when we discuss। Okay, I hope it is clear। उधर साहब मिक्स मोटिवेशंस का क्या करेंगे? हाँ, we put them aside, we can say कि भाई हाँ इसमें ये भी है बट थोड़ा सा अनित्य बोध की बात भी है, तो जिसमें थोड़ा भी बोध, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी ए ग्रेजुएटेड पाथ है ना, धीरे 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 अनित्यता का महत्व बढ़ता जाएगा, दूसरी महत्व कम हो जाएंगी, क्योंकि अनित्यता की इतनी पावर है कि वो सारे जो हमारे सांसारिक सुख की इच्छा है उसको वो ड्राउन कर देगी। और जो हमारा ट्रांजिशन, जैसे कल हमने चर्चा, परसों की दिशा चर्चा, वो ट्रांजिशन भी अपने आप क्लियर हो जाए कि ये जब जब हमें एक हायर लेवल ऑफ हैप्पीनेस का टेस्ट आ जाता है तो लोअर ऑफ हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली ड्रॉप्स। वी कैन सी इट इन दैट सेंस आल्सो कि जो मिक्स्ड है, या इन द बिगिनिंग वी हैव some element of other reasoning to drop something, but there is also an understanding of impermanence with respect to that sensory input. Then we can proceed sequentially, gradually, and we have to see with respect to all the 6 sense doors। Okay, Well, even if it's with respect to one sense door and there is an element of so तीन लक्षण, so it is a beginning, it will admit it in the category। तो मेनली द इश्यू टू चेक इज कि जो भी अपना एग्जांपल है, क्या जी, उसमें जो भी अनिच्छ संज्ञा इन्वॉल्व है क्या उस ट्रांजिशन जो हमारी, जिसको हम कह रहे हैं ये मेरे लिए त्याग आधारित प्रसन्नता है, क्या वो त्याग आधारित प्रसन्नता के अंडरलाइंग जो बेसिस है वो अनित्य संज्ञा है, दुख संज्ञा है, उसमें तीनों लक्षण का कुछ कुछ पुट तो है ना, देन विल पुट इट इन दैट कैटेगरी so that we become as the Buddha wants us to focus on that, and then sequentially we increase the depth of that understanding। So it is a kind of a graduated path laid out in that manner।
तो हम धीरे धीरे उसको बढ़ाते चले जाएंगे अपने, और इन रिफ्लेक्शन से अपने अनुभवों को और देख के, और जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा हमको अनुभव होता रहेगा, विल प्रैक्टिस मोर एंड मोर ऑफ दीज थ्री लक्षणास. So, for example, giving up something to become a better person or to um, uh, come in less conflict, let's say within the family or the office. Strictly speaking, It does not fall in this. It won't fall in this category. जैसे कोई शील तोड़ रहा है और अब शील तो उसने पालन करना शुरू कर दिया क्योंकि शील टूटने के दुष्परिणाम देख लिए. So it's a wholesome thing to do, certainly, but it won't lead to insight by itself. It won't lead to insight of anicca. So that is an important point where we are distinguishing this. कल जैसे मैं डिस्कस कर रहा था तो मान लीजिए कि एक ड्रेस जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी किसी जमाने में, वो अचानक मुझे दिखाई दी और मुझे लगा कि ये मुझे किसी को दे देनी चाहिए. और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वेदर आई वाज, ये मुझे अनित्य बोध हुआ या अनित्यता का बोध हुआ, या was it that because I didn't need it now, though it was looking as fresh as anything, मगर मुझे लगा ये मुझे दान कर देना चाहिए. So that Will is it more be fall in that? No. नहीं. Not apparently, no. well, we don't know what his motivation is, not Yeah. isn't it? Yeah, but the way he's describing it, it doesn't seem like. Or because he doesn't need it. Yeah. No need. He's saying, I was wearing it, but then I thought I must not wear it anymore now. Because Yeah. you thought so. Because I thought that I can give it to somebody because it's new. It's absolutely new, and I need less clothes now, and this may I can easily give to somebody. And the thought that you need less clothes is because I don't feel like wearing too many, having too many in my cupboard anymore now. और वो फीलिंग है क्योंकि मेरे कबर्ड में इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि because I don't need them. Because मेरा 1-2-3 कपड़ों से काम चल जाता. Yeah. So the element of understanding based on anicca is not there in that sense. No? That's what I'm trying to understand, whether it was nitya or it was compassion or, क्योंकि कल इस पे बहस हो रही थी काफी, तो इस पे I do agree कि हाँ पूरी तरह से अनित्यता शायद नित्य का बोध नहीं हो सकता ये, but some element of that is what I was trying to understand. वो तो आपको पता करना है ना, हम तो नहीं पता कर पाएंगे. बट जिस तरह से आप डिस्क्राइब कर रहे हैं उससे ऐसा, क्योंकि अनित्यता का बोध का क्या मतलब हुआ कि भाई जो सुख मुझे उस कपड़ा पहनने से पहले आ रहा था, मैं समझता हूँ कि उसमें कुछ रखा नहीं है और वो इम्परमानेंट है. जो कुछ कपड़े पहनने का सुख था वो इम्परमानेंट है, एंड आई डोंट रियली हैव टू and it will any attachment to that kind of a happiness will lead to suffering because it will not be within my control. So that kind of an understanding कि जो इसका वर्ल्डली डायमेंशन था, उस वर्ल्डली डायमेंशन में एक डेफिशिएंसी है, उसमें एक हैजर्ड है. So I understand that there is nothing really to be gained by the happiness of having a good clothing on myself. मुझे अच्छे कपड़े पहनने में जो सुख मिलता है, वो उसमें सुख में कुछ रखा नहीं है. तो अगर मुझ में वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, and then of course there is an element of compassion also involved in it. There's an element of reducing the, some element of nekhamma involved in that you're giving away something good. But from the point of view of anicca sanya, that is apparently not visible. So we have to really investigate. Everybody has to investigate for himself. What I'm trying to understand is, one, it's again a mental process wherein you are, आप इसको अपने आप को रिमाइंड तो हर बार नहीं कराएंगे. एक आपके मन में एक धारणा बन गई, और वो धारणा अगर अनित्यता की बन गई, अब ये जरूरी नहीं है कि वो रिफ्लेक्ट जब कर रही है तो उस समय ये
सोच के कर रही है कि भाई ये क्योंकि मुझे ये हम- अनित्यता का बोध है इसलिए मैं ये दे रहा हूँ, ऐसा तो होता नहीं ना। ऐसा ही एक आपके अंदर एक आपका एक कैरेक्टर बिल्टअप होता है, आप उस हाँ, कैरेक्टर में खो जाते हैं या उसमें रम जाते हैं और आपके एक्शन उस तरह से होने लगते हैं। इज इट नॉट लाइक दैट? अनित्यता का कैरेक्टर अगर बन जाए तो बहुत बड़ी बात है बंधु। मैं वही तो कह रहा हूँ सर, इट्स अ वेरी ये मैसिव थिंग। इनिशियल स्टेज पे देन यदि विल लूज, हमारे में निब्बिदा जाग जाएगी। अगर हमारी गृहस्थ सुख से जो वर्ल्डली हैप्पीनेस के प्रति अनित्यता का बहुत स्ट्रांग हो जाए, इट विल गिव राइज टू दुख बोध एंड इट विल गिव राइज टू अनात्म बोध, इट विल टेक अस टुवर्ड्स नित्यता। सो वो हम बुद्धि के स्तर पे जान रहे हैं या वेरी ट्रू, बट वो इंटरनलाइज नहीं हुआ है। That is the बुद्धि के point. स्तर पे जान गए और उसका कुछ इम्पैक्ट हो रहा है और किसी हद तक उसको किया समझा जा रहा है। आई कांट से ये गृहस्थ में रह करके जो जिस तरह का एक भाव बन रहा है और उसमें न तो एवर्शन है और ना ही क्लिंगिंग है, और इस तरह का अगर भाव हो रहा है कि हाँ ठीक है वस्त्र पहनने हैं, अब उसमें साफ सुथरे हों, सही हों, अब उसमें वो जो एक ग्लैमर है, जैसे एक जमाना था कि कुर्ते पहनने का बहुत शौक था, आज बिल्कुल नहीं है। अब ये जो एक मन में धारणा जो ये ग्रेजुअली हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये अचानक अचानक हो गया। it is happening over the period of time. So I Why? think, No, I'll request you to investigate why. yeah, that's what I'm saying. I'm investigating and I'm coming to this conclusion that it is because of the satsang that I'm having every day, because something is going in the inside and it is building up inside. Yeah, the satsang has many dimensions, isn't it? It has dimensions of samma sankappo, it has dimension of compassion, it has dimension of aparigraha. We all talk of these good qualities, you know, wholesome qualities. तो Right. हमारे बहुत सारे हैं ना, तो all those wholesome qualities do result in very good actions. There's no doubt, but they don't necessarily result in anicca. That's the point. That's the But point. they are basically वो नींव तो बढ़ती है ना उससे, आप नींव तो देखो डल ना, रही है ना। विचार करके देखिए ना, विचार करके देखिए ना। Super, एक और एस्पेक्ट है, आई में जी फिर से कहें, क्या कह रहे हैं एसपी साहब, फिर से कहें। कि मैं थोड़ा सा इंटरव्यू करना चाहता था, हाँ हाँ, टू से दैट ये जो इंट्रोस्पेक्शन है कि हमने ये काम किया वो अनित्य दुनिया की पुष्टि की वजह से किया, उसको जानने के लिए हमें मतलब इसका डिस्कशन में नहीं इतना जल्दी आ पाएगा। डिस्कशन में हम कह सकते हैं कि ऐसा हुआ या वैसा हुआ, पर जब तक हम अभी बैठ के उसको प्रॉपरली इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे, वो कहना मेरे लिए मुश्किल होगा कि वो ऐसा था या नहीं था। ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है मुझे लगता है। बिल्कुल ठीक बात। मेरा उद्देश्य यही है कि हम अन्य होलसम मेंटल फैक्टर्स को अनित्यता से इंप्यूट ना कर दें, क्योंकि कई होलसम फैक्टर्स में प्रज्ञा नहीं होती है, you know? The prajna part is not necessary ingredient of wholesome mental factors. It is an occasional factor which has to be cultivated. So that's a very powerful lesson from Abhidhamma कि wholesome factors में अलोभ और अदोष होगा. There will be absence of greed and absence of hatred. But absence of delusion will not be there unless it is properly cultivated. So इसीलिए कहा जाता है कि जब भी हम होलसम काम करते हैं उसमें अगर सेंस ऑफ सेल्फ इन्वॉल्व है, then it becomes of a different flavor altogether. Now we don't know whether it is involved or not. That I have to find out for myself. सेंस ऑफ सेल्फ तो है। Yeah, so we have to see that part, you know. नहीं वो तो हम दान करते हुए भी, यानी उपोषित करते हुए भी मैं टॉक दे रहा हूँ, उसमें भी हो सकती है। See, so it's such a subtle thing. You can be really trapped. So one has to be very, very cautious and careful. इसलिए उसको हम क्या करते हैं? We remind ourselves before beginning any such activity. Remind ourselves
Naitat mam naesvam asmi namesu vattati. So you keep quiet for a minute, half a minute it takes. Just keep quiet. So that we can keep that sense of self at bay as far as possible. That's the point. Okay. So let me Sir, leave it. I just want to, can I, अभी राजेंद्र जी ने जो एग्जाम्पल दिया है, like out of compassion or he doesn't want so many clothes, 2 या 3 कपड़ों से काम चल जाता है. Probably while he was giving, that was the thought process and there was a compassion. Later when he is reflecting on it, तो ऐसे उनको लगता होगा कि ये सब कपड़ों के प्रति मुझे कोई आसक्ति नहीं है कि I have to wear this clothes now. तो वहां पर एक यू डोंट नीड इट एनी मोर, तो अनिच्छा का वो पुष्ट होता है ना, बिकॉज नाउ ही माइट नॉट हैव दैट क्रेविंग या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट कि आई नीड दोस काइंड ऑफ क्लोथ्स व्हाइल ही इज रिफ्लेक्टिंग लेटर, कि इमीडिएटली नहीं, बाद में धीरे धीरे जैसे रिफ्लेक्ट करते हैं तो यू माइट नॉट नीड सो मेनी थिंग्स. सो विल इट नॉट कम अंडर त्यागाधारित इन दैट सेंस? सोचिए, think yourself, think deeply, and let us think for ourselves. That will be very helpful actually, because we have to really introspect. हमें खुद ही करना पड़ेगा. मतलब we can't retrospectively find out कि मेरे मन में ये भाव था. It has to be a, इसलिए कहा जाता है कि actively करना चाहिए. Okay, not retrospective like. Yeah, इस तरह के इस issue में जब आप when you are doing an act, there is a volition involved, है ना? तो उस volition की wholesomeness को assure करने के लिए, whether the panya was associated with it or not, ना? इसलिए कहा जाता है an wholesome act is a part of Abhidhammic talk, teaching, and wholesome act done with the knowledge that it is wholesome is much more powerful than an wholesome act done without the knowledge that it is wholesome. It looks very funny, na? But see, because में 3 roots हो जाते हैं. They give a very mathematical answer. There are 3 roots now. Earlier there were 2 roots, so the effect will be much stronger. So these are things worth pondering, no? Knowingly कर रहे हैं कि unknowingly कर रहे हैं? You get your point? So are we aware of the anicca and then doing it, or are we later kind of inserting anicca out of it because of our intellectual understanding? No, we are not inserting. I mean, like the wisdom arises later. What I mean is that, like, nahi, then it is not. That's what you're saying. The happiness has already been enjoyed or not enjoyed or whatever it is. Later, my submission is that whatever is happening at that spur of a moment, a decision is being taken mentally that this is to be done. Now, this has happened because there is something happening in the mind which has prompted this to happen. अब ये उस समय क्योंकि एकदम से जो एक विचार आया और एक भाव बना, इसके पीछे तो कोई कार्य हुआ ना, अदरवाइज वो भाव तो बनता नहीं, पहले तो नहीं बनता था. वही कह रहे हैं ना, वो भाव क्या है? I think that's the point that's being made. That's what I'm trying to say कि वो जो भाव है. अगर कोई भी डिसीजन, एक और क्राइटेरिया में बता, अगर कोई भी डिसीजन ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट लिया जाता है, that is not seen to be done with proper consideration. There's a Dhampada verse to that effect. सहसा कोई कर्म कर दिया जाए और समझ बूझ के काम किया जाए, उसके क्वालिटी और क्वांटिटी में ऑफ कर्मा विल बी डिफरेंट. नहीं, जब हम दान देते हैं, जब हम दान देते हैं, do we do it with understanding or do we do it because सब कर रहे हैं, अच्छा लगता है? Oh, good, that's also good, of course. Then not, but the impact it हम किसको देख रहे हैं? हम तो आसपास किसी को नहीं देख रहे हैं. परिवार में तो कोई ऐसा नहीं करता, बल्कि परिवार में तो एक्युमुलेट करने की टेंडेंसी है, आज भी है. I cannot find out for you what was your motivation. मैं जो कह रहा हूँ, मेरा सबमिशन सिर्फ इतना है कि संगत सोबत का असर होता है और वो धीरे धीरे. These are common words, these are क्या कहते हैं? What is it called? Colloquial language. It's very good. We are talking in precise Dhammic language. क्या मेंटल फैक्टर था?
त्याग आधारित तो था ही, मेरे को तो लगता है कि वो त्याग आधारित था। चलिए ठीक है, दैट्स लगता है तो आप और वेट करिए, पर इन्वेस्टिगेट फर्दर एंड सी फॉर योरसेल्फ। ठीक, you see the definition properly. Again, let me repeat, definition is, I think I better read it out rather than my saying, because maybe it might seem more convincing. Okay, यह जानते हुए, kindly listen carefully, यह जानते हुए कि रूप अनित्य, परिवर्तनशील, क्षय और समाप्त होते हैं, जब कोई यथाभूत प्रज्ञापूर्वक देखता है कि सभी पूर्व रूप, सभी वर्तमान रूप अनित्य, असंतोषजनक और परिवर्तनशील प्रकृति के हैं, तो प्रसन्नता उत्पन्न होती है। ये बात हुई। तो जो प्रसन्नता इस कारण से उत्पन्न होती है, उसको त्याग आधारित प्रसन्नता कहा जाता है। दैट इज अ वेरी क्लियर एनंसिएशन ऑफ डेफिनेशन। अब आप इस पे विचार करते हुए आप चेक कर लीजिए उसमें क्या बात है। Maybe it is you are not able to articulate, ऐसा भी हो सकता है, but you please check. Definition is absolutely clear, no doubt on that. see, रूप We को can't put देखा clear है, and we can't put anything else in it. There's nothing else can we put. Is it clear now? Or should I say it again? यह जानते हुए, but knowing, विदित्वा, रूपंतेव अनिश्चितं विदित्वा, जानते हुए, विपरिणाम, विराग निरोधम, पुब्बे, पुराने जो रूप थे, सब्बे ते रूपा, ऑपरेटिव पार्ट पाली में, सब्बे ते रूपा अनिच्चा दुखा विपरिणाम धम्मा। ओके, ये जानते हुए, एवं एतं, इस प्रकार, यथाभूतं सम्मपन्याय पश्यतो, इस प्रकार सम्यक प्रज्ञा से उसको देखने से जो प्रसन्नता उत्पन्न होती है, उसे नेकम्म सोमनस्य कहा जाता है। दैट्स इट। So it's absolutely clear. The definition is clear. Now we have to apply it and see whether we fall within this category or not. Okay? So, Prasad, if I have, let's say, contemplated on some actions that I have taken and seen that, okay, there is no element of greed in this action, no element of dvesh in this action. So that perspective, that will not lead to this conclusion, because that is not based on anicca. Yeah, that's right? what I'm saying. That's, yes. So this is an understanding which perhaps we didn't have that clearly. Yeah, So this is what I'm saying, that wholesome mental factors do not necessarily include anicca sanya. They are wholesome mental factors. Talking about myself, the only factors where the anicca factors perhaps have some role is, in my life, is about my health, my certainty of impending death, and those kinds of illnesses. So there, the anicca factor comes in fairly strongly. But on other matters, it doesn't directly normally come in. Normally we look at, okay, is there some motive which is unwholesome? So that's the kind of doubt I have. That probably I'll not find any experience worth mentioning, which will have, other than these kind of experiences, the basis as anicca element. Anatma, yes, there could be an element of anatma, but anicca directly, perhaps not. At least in my case. वो अलग-अलग चलते हैं क्या? वो साथ नहीं चलते? I don't know. Anatma perhaps includes anicca, but that's in the background in some way. That's perhaps. how I've understood it now, that they are running together. It's always anicca dukkha sanya, dukkhe anatta sanya. It goes in that way. So we have to really check when we say something, whether it is matching with the canonical description. So dukkha anatma is something that perhaps I can relate to in some experiences. But anicca dukkha is more difficult, perhaps. Yeah, as a basis for it's a question of it's a question of one's experiences, conditioning, so many things. So it depends. I don't know. For me, somehow, I don't know, right from childhood, the pleasant experiences have never captivated me too much.
So for me it has always been कि अभी इतना हंसी खुला हमारे कश्मीर में एक ये कहावत भी है, कोई और बच्चा ज्यादा हंसने लगता है तो कहते हैं चुप हो जा अभी रोना शुरू कर देगा. That is true. So that's a kind of understanding of anicca, that these things are not lasting. Please hold on, don't get overexcited. And this has been a constant refrain. Experiences हैं पर वो याद नहीं आते आसानी से. So even if whenever I have gone in past parties, I would remember this is soon going to create some complications. So be alert. Don't get into trap of this kind or that kind. So it depends on conditionings, past conditionings carried over from lives and so many other things. But the question here is very clear. We are talking about a particular, we're not saying that other kinds of renunciations are based on panya or based on compassion are not useful or should not be done. We're not saying that. We're pointing out the importance of doing something with the knowledge of impermanence. It has a powerful importance. That will lead to us to freedom from suffering, because that will lead us to sammadhi. That's the point. Other things are all adjuncts. Yeah, they help, but they don't directly lead to some. This directly leads to sammadhi. That's the point being made. I think we'll have to practice it for some days and then come back and discuss it. मैंने 2054 की डेट इसलिए दी हुई है सुरेन जी. मैं जो सबमिशन करना चाह रहा था एक और बार, इसको दोबारा पढ़ के एक बार फिर मैं आपसे बात रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जानते हुए कि रूप अनित्य, परिवर्तनशील, क्षय और समाप्त होते हैं, जब कोई यथाभूत प्रज्ञा पूर्वक देखता है कि सभी पूर्व रूप और सभी वर्तमान रूप अनित्य, असंतोषजनक और परिवर्तनशील प्रकृति के हैं, तो प्रसन्नता उत्पन्न होती है. ऐसी प्रसन्नता को त्याग आधारित प्रसन्नता कहा जाता है. तो एज पर दिस डेफिनेशन it is basically completely different than what I was thinking. इस हिसाब से तो ये है कि नित्यता को समझना, अनात्म को समझना और समझ करके हर एक रूप को कि ये सब अनित्य है, ये वो एक भाव मन में आना. अगर कोई चीज मुझे पसंद आ गई और उस समय मुझे ये थॉट प्रोसेस आ गया, तो then I'm not attracted towards that. Does it fall in that category? Yeah, अभी तक हमने अभी तक तो सारी चर्चा की. Let me put it again in perspective. हमने चर्चा क्या की, रूप की अलग से चर्चा की, उसके पूरे एक एक कोण कोण करके देखा कि वो अनित्य है, दुख है, अनात्म है. बार बार हमने समझा, कल ही अलग अलग तरह के समझा, उसके धातुओं के आधार पे समझा, फिर उसके आस्वादन को समझा. So we have analyzed that part, that first thing was the रूप अनित्य है. और अगर हमको ये बात सचमुच में हृदयंगम हो गई, समझ में आ गई, then what happens? रूप आधारित जो हमारे नॉर्मल हेडोनिस्टिक टेंडेंसीज हैं, उसको सुख देने की, जो गृहस्थ सुख की जो हमारी काइंड ऑफ इंस्टिंक्टिव टेंडेंसी है, वो अब हमको तुच्छ लगने लगती है. यार ये कहाँ, ये तो दुख है, इसको छोड़ो ना. एंड देन सुख क्यों अराइज होता है? इसलिए कि उसका जो वजन है, उसका जो भार है, वो हमारे से हटने लगता है. बिकॉज गृहस्थ सुख के लिए हमको एफर्ट करना पड़ता है. We have to seek, we have to apply effort of various kinds, and then it produces friction, it produces all kinds of difficulties. We know it. So we understand, यार वो अनित्य है, उसको इतना महत्व मत दो, अपने आप हो रहा है तो ठीक है. Why should I seek that? I should seek this. It's a total change in the direction of my search. इसलिए मैंने एक दिन वो भी कोट किया था, changing the direction of the search, कि वो अनित्य है, दुख है, अनात्मा है, उसको कंट्रोल में नहीं है, दुखी है, और क्या उसको पीछे पीछे पड़ना. Let us go further and see that this understanding of anicca itself gives us joy. It gives us I shouldn't use the word joy, it gives a mental pleasant feeling. You feel good that okay, एक बोझ हट गया. अब मुझे उस वो कपड़ों को देखने के लिए, मार्केट जाने के लिए और 1000 चक्कर करने के, ये वाला लेना है कि ये वाला लेना है, वो सब खत्म हो गया यार, खत्म हुई बात, finished. So I have overcome one
damn thing, one damn location where I was used to search happiness. That is over. So that gives us a relief. And as we do it with other objects, eventually all objects, we understand anicca so strongly कि हर ऑब्जेक्ट की यही कैरेक्टरिस्टिक है यार. अब वो आंख का ऑब्जेक्ट हो, चाहे कान का म्यूजिक हो, चाहे टेस्ट भोजन हो, चाहे टच हो, चाहे स्मेल हो, सारे ही ऐसे हैं भाई. गिव अप अटैचमेंट टू देम. डजंट मीन मैं एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ. अभी आपने बात की, जैसे मैंने आपको रूप के बारे में बताया. अब ये जो हुआ, मैं इसको इसके साथ लिंक करता हूँ कि ये उस समय जो हुआ वो एक मेंटल स्टेट बना हुआ था जिसकी वजह से वो हुआ. अब नाउ लेट मी कम टू म्यूजिक. एज यू वेरी नो, ऑल ऑफ मेरे जितने भी दोस्त सबको ही मालूम है, मतलब म्यूजिक वाज माय फर्स्ट लव इन माय लाइफ. एंड टुडे द सेम म्यूजिक इज नॉट एट ऑल देयर. अब ये ग्रेजुअली हुआ, ये सडनली नहीं हुआ, इसमें समय लगा. और ये धीरे 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 आज ये हालत है कि देयर इज एब्सोल्युटली नो अट्रैक्शन टुवर्ड्स दैट साउंड व्हिच यूज्ड टू मेक मी मैड. खुद अपने को गाना, मतलब 24 घंटे मुझे गाना गाना था, आज मुझे वो शौक नहीं है. अब ये नहीं मैं कह सकता कि सुनता नहीं हूँ, कभी कभी सुनने को मिल जाए तो इट्स नॉट, आई एम नॉट हेटिंग इट, बट पॉइंट ये कि वो एक क्रेविंग जो पहले मेरे में थी वो खत्म हो गई है. तो नाउ दिस हैज नॉट हैपेंड. मैं ये कहूँ कि अचानक ही हो गया सब कुछ, इसमें समय लगा. और ये समय इसी वजह से लगा क्योंकि वो धीरे धीरे मानसिक लेवल पे एक कुछ ना कुछ तो परिवर्तन हुआ ना, जिसकी वजह से ये हुआ. बट वो अब आपको देखना है कि क्या वो उस परिवर्तन में अनित्य बोध निहित है या नहीं है. तो है ना, तभी तो हुआ ये. अगर अनित्य बोध नहीं होता तो ना, यही तो मैं कह रहा हूँ, तभी मत कहो मेरे भाई. नहीं सर, ऐसा है क्योंकि बात ये है ना कि जब हम जिस लेवल पे आप हमको समझा रहे हैं और उस लेवल पे हम समझना चाह रहे हैं, तो मैं ये सबमिशन मेरा ये है कि अनलेस अंटिल दिस इज सच ए कंडीशन अराइजेस, तब तक ये पॉसिबल नहीं है. आप उस पर विचार करके देखिए. जरूरी नहीं है कि हर चेंज अनित्य बोध के आधार पे हो, ऐसा नहीं. ये फिर और कैसे हो सकता है? चेंजेस होते हैं. हाउ कैन इट बी पॉसिबल? पर्सन हु वाज सो मच इन्वॉल्वड इन म्यूजिक, 24 घंटे म्यूजिक करता था, तो आज उसको उसका बिल्कुल शौक नहीं है, तो क्यों वो ऐसे कैसे हो गया? फिर यू हैव टू फिगर इट आउट. मैं कैसे बता सकता हूँ? आई कैन ओनली स्पेकुलेट. बट मेरा निवेदन ये है कि उसको हम उसके कारण क्या, ये सुनिए, लेट मी पुट इट इन द अदर. क्या म्यूजिक से आपका वो हटने के कारण मन में प्रसन्नता जागी है? मेरे को अप्रसन्नता नहीं है. नहीं, फिर एब्सेंस ऑफ अप्रसन्नता क्या? आपने प्रश्न को टाल दिया. नहीं, मैंने कहा कि मुझ में अप्रसन्नता नहीं है, मुझ में कोई दुख नहीं है कि मुझे कोई दुख हो रहा है कि मैं संगीत नहीं कर रहा या मैं प्रसन्न हूँ. लेकिन ये लगता है कि यार एक मुसीबत टली, मेरी संगीत के प्रति एडिक्शन खत्म हुआ, एंड आई एम नाउ फ्री फ्रॉम बर्डन ऑफ सर्चिंग फॉर टेप्स एंड गोइंग टू स्टूडियोज एंड मेकिंग फिल्म्स एंड मेकिंग वीडियोज. ये मुसीबत हट गई. डू यू रियली फील सो? Then it is based on anicca. See, that's right. You have to penetrate it deeper, ना. That's right. ऊपर से कई कारण हो सकते हैं ना, कई कारण हो सकते हैं. नहीं, अनिच्चा तो सबसे पहले ये कि I am aging, so I know कि I am not singing what I used to sing when I was 20 years old. Then it has nothing to do with anicca. Here it is basically to do with falling that's one thing. Sensitivity of ear. It has to do with falling sensitivity of ear. So it's a different ball game altogether. यही तो कह रहा हूँ ना, this needs deep introspection actually. तभी आपको पता चलेगा क्या हो रहा है. Because otherwise if you don't do it, आप कहेंगे इससे क्या फर्क पड़ता है? We remain in a delusion. वो delusion में रहते हैं. अरे मेरा तो अनित्य बोध पुष्ट हो गया, हुआ नहीं. That's the point. That's why these definitions, these words are highlighted, are so crucial. We should repeat them again and again and again and test whatever we say in the light of these words. तो उससे बड़ा फायदा होता है. Sir, I just want to check with you. If you're saying that impermanence, you have to have an understanding at that time of the situation. Firstly, I am not saying. Please don't tell me. Okay. Buddha is saying. Okay. Okay, sir. So now I just want to check with you. Yesterday, like,
how do I put it across? Not that I want to put it in a very open forum, but still you're saying it. I just want to clarify. Like yesterday, I had a first breakthrough event. Okay, when I went there, I could like see it, like, you know, it is all impermanent. There was no pressure as such, because I was looking, I was reflecting on my past also, but I have to do my work, right? So I was doing my work, but I know that this is impermanence and this will also change. So that kind of, and I was reflecting on the past also, ki in my past, where I was, whatever I was doing, there was so much of pressure, and like, you know, there was so much of ki karna hai, this pressure is there and you have to do it, and there was a slight kind of an attachment, I would say, to do a best thing. It's not that I was not doing yesterday, but I know like this will change, and it's this mein kuch rakha nahi hai, but as a livelihood I was working on it. What I wanted to say is that understanding was there then and there, and there was no pressure as such. So would you, this will also come in this impermanence, like actually, because I, or did I confuse it and said too much? No, the question is that particular activity जो भी आपकी describe कर रही हैं, that was giving a happiness earlier, isn't it? There was a tendency to hold on to that happiness. That is a जो normal worldly happiness आती है ना किसी भी काम करने से, job से, anything, and then we seek that happiness and we try to multiply that in various. Now, if one realizes that that happiness is impermanent, it conceals a lot of suffering, and it is without my control, and therefore there's no point in seeking that. Of course, I have to do that because of livelihood and other considerations, but I no longer seek that. Yeah. So Okay? that is what I was Then, coming to, yeah, because I so was reflecting on it. if you're no longer seeking that, and you realize it truly, and this becomes a abiding kind of state of mind, then of course it will fall under the category of, then जैसे आपने कहा कि burden हट गया, tension कम हो गया, yeah, those are indicators of the movement towards a pleasant mental feeling. So that will become under that case if those conditions are satisfied, which means this should result in intensifying your अनित्य संज्ञा. This should give you confidence. यार अनित्य संज्ञा बहुत बढ़िया चीज है. I should work on it. So now let me work on it with respect to other sense doors also. Yeah? Then we can say हाँ सचमुच में अनित्य संज्ञा का एक ड्रॉप 2-4 ड्रॉप पड़ गए. अब और इसका टेस्ट अच्छा लगा, और इसका टेस्ट अच्छा लगने से अब बाकी डोमेन में भी मैं कोशिश करता हूँ. वहां पे भी मैं जहां जहां अटका हुआ हूँ सेंसरी प्लेजर्स में, उसको अनित्य बोध, उसकी अनित्यता को समझूं, जानूं और अनित्य बोध पुष्ट करूं. So then it will really be in that dimension, certainly. Okay? Okay, So you can just read the sentences properly and you'll yourself understand कि हाँ क्या ये इस आधार पे उत्पन्न हुआ है तो ठीक है, surely. Then you must check up all the ingredients are there. Okay. It's already 8:04. हाँ बोलिए, चलिए, we can have free and open-ended discussion. बताइए. ग्रुप्स, स्मॉल ग्रुप्स में डिस्कशन होने वाला है ना? हाँ अभी तो 8-5 तो हो गए. No, I have some example which I have recently experienced. Can I? हाँ बताइए. According to me, it is what you are saying, but I want to understand whether my thinking is correct. See, till something happened very recently, I lost a very young colleague of mine. I was feeling very happy that the way things were going on was according to what was planned. And I was feeling a lot of satisfaction and joy out of it. So it is going on, so I can now gradually withdraw from the work that I'm engaged in. And I was feeling very happy. And suddenly, out of blue, a very young colleague on whom I had so much of confidence, she passed away.
and that really jolted me. And as I was thinking, कहाँ मैं थी और फिर वापस कहाँ वापस आ गए, ये कितना बदल गया, ये मुझे महसूस हो रहा था ये जब हुआ तब। अब तब मुझे ये पता नहीं था कि अनिश्चय संज्ञा है सब कुछ, मगर मुझे पता चल रहा था कि सारा कहाँ था और कहाँ से कितना सारा बदल गया। और जो वेडनेसडे रात को जब मुझे पता चला 11 बजे कि what was wrong with her, that it was a leukemia and that her kidney failed while she was in the hospital, so a renal failure, and I felt so happy कि डॉली चली गई, नहीं तो कितनी दुखी होती। पे मैं देख रही थी कि कितना बदल रहा है मेरी, जब चली गई तब मुझे कैसा लगा, उसके बाद जब ये पता चला कि इस वजह से वो चली गई तब मुझे अच्छा लगा कि वो चली ही गई, नहीं तो वो बहुत दुखी होती। तो ये सब मैं मार्क कर रही थी कि कितना बदलाव आ रहा है सारा, एंड दैट गिव मी that really gave me so much of relief. एक तरह की मुझे शांति मिली। मैं ये मुझे पता चल रहा था, but I was not very conscious of applying the way it is being, narrated here. But I could see this. Am I on the right thinking, or? Are you saying that this mental feeling, pleasant mental feeling, is of this category of nekhamasitani, somanasani? आप ये कहना चाहती हैं क्या? किस बेसिस पे? इसमें अनित्यता की बात कहाँ से आई? ये तो change of perception. It is basically change of perception. Initially, your perception was she was a young person, she died, and that was sad. Now the perception is she had a very serious problem. अगर वो जिंदा रहती तो बहुत दुख पाती. So just a change of perception, which is resulted in change of your response to the feeling. That's all. There's no sanya, there's no pragya involved in it. There's no anicca sanya involved in it. तो उसको उस कैटेगरी में कैसे डालेंगे? I can't see that. See, we should not mix up every action of pleasantness will not be anicca sanya, will not lead to anicca sanya. So we have to see what exactly is the trigger. है ना? You have to see the trigger. किस कारण से, जैसे यहाँ कहा जा रहा है, इस कारण से जो शब्द इस्तेमाल किए गए बड़े स्पष्ट है एकदम, जो हमने ट्रांसलेशन भी किया है ना। मैं और सोचूंगी। जी ये जानते हुए कि रूप अनित्य एंड सो ऑन है, और सभी रूप, पूर्व रूप, अभिवर्तमान रूप अनित्य, असंतोषजनक, प्रवृत्तिशील प्रकृति के हैं, ये जानते हुए जो प्रसन्नता उत्पन्न होती है उसे त्याग आधारित प्रसन्नता कहते हैं। Now, is there any such element involved in what you said? I can't see that. So it's not of that category, na? So we can investigate further. आप देखिए जी। ओके सर, डॉक्टर साहब काफी समय से कुछ कह रहे हैं। हाँ डॉक्टर साहब बोलिए प्लीज। कौन कह रहे हैं? पिछले 2 दिनों से ये सलायतन विभंग सूत्र पर विचार करते हुए मेरे एक बना विचार, मतलब रिफ्लेक्ट हुआ, अगर कुशल अकुशल या ब्रह्म विहार के कारण सोमनस दोमनस या उपेक्षा उत्पन्न हो रही है तो वो गेह सितानी में आएगी, और अनित्य दुख अनंत के कारण अगर सोमनस दोमनस या उपेक्षा पैदा हो रहा है तो वो नेकम सितानी में आएगी। जो अनित्य संज्ञा के आधार पे होगी वो उसमें आएगी, और जो दूसरी उसमें आ रही है उसमें वो नेकम सितानी में आएगी। हाँ, और जो दूसरी ब्रह्म विहार के कारण वो है कुशल, कुशल के कारण वो सब, हाँ वो गेह सितानी में आएगी। वो गेह सितानी में भी सब कैटेगरी है ना, निरामेश्वर सामिस। हाँ उसमें भी कई सारी कैटेगरी है, मगर एक ब्रॉडली कह सकते हैं कि जब तक अनित्य दुख अनंत वाली बात नहीं आएगी
तब तो नेक काम हाँ, शैतानी में नहीं आएगी। ये बिल्कुल परफेक्ट है, दिस स्टेटमेंट इज। हाँ। और जी। ये बात केवल बुद्धिज्म नहीं है, बाकी रिलीजन में नहीं है, ये समस्या है। बाकी में हम ब्रह्म विहार में पहुंचते हैं, कंपेशन पहुंचते हैं, हाँ, क्या तो पहले ये हम तो दूसरे थे अब बहुत ऐसे हो गए, तो वो बहुत सारी हमारे पुराने संस्कार हावी हो जाते हैं, तो हम नहीं वो, क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ा सटल है ना, तो उसको समझने में थोड़ी देर लगती है। थोड़ी इसलिए And दिक्कत हो। so it takes time, certainly. There's no doubt. हम्म, So we are discussing it so that it becomes clear to us. ताकि हमारा जो छोटा सा ग्रुप है 15-20 लोगों का जो रेगुलरली आ रहे हैं, 10-11 लोग जो रेगुलरली आ रहे हैं, उनको तो एटलीस्ट क्लियर हो जाए बिल्कुल, ताकि हम इससे क्लियर होने का क्यों कर रहे हैं इसको क्लियर, इसलिए कि हम उस एक को छोड़कर दूसरे की जो बात की थी वो अपने आप हो जाएगी, समझ में आ जाएगा क्लियरली, तो then we'll be able to naturally progress in the रखना, इन रक्षणों के स्ट्रेंथन होने में प्रोग्रेस अपने आप होती जाएगी, एक एक करके जैसे बढ़ते चले जाएंगे इन वेरियस कैटेगरीज के बाद से। तो मुझे बड़ा सटीक और महत्वपूर्ण लगता है इस तरह का आइडेंटिटी करना, क्योंकि प्रैक्टिकल तरीका बता रहा है कि आप पहले किस तरह से आगे बढ़िए। There's a before, maybe other colleagues will ask other questions. Just before that, मैं quickly ये technicality थोड़ी आपसे clarify कर लूँ. So I can see कि wholesome universals में non-greed और non-hatred है, जैसा आपने बताया है ना. जी। पर जो नॉन डिल्यूजन है वो कोई अलग ही कैटेगरी है नीचे, वो ऐसा तो नहीं लिखा उसमें कि वो occasionals, that is called occasionals. हाँ, but it doesn't, it may or may not be present. right, but it's not classified like that, because then he has abstinences, he has illimitables and non delusion, है ना, ये सारे occasionals हैं. जो होलसम चित्त है उसके 19 करेक्ट, या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बाकी सब ओकेजनल्स हैं which may or may not be present depending on अच्छा, बाकी 6 occasions है. Okay, so that's fine. So now non delusion में wisdom faculty लिखा है, so that includes all 3, I'm assuming, isn't it? yeah, it's the panya basically. So when you say anicca sanya, you're actually talking about that whole package. whole package, yeah, okay. अच्छा, फिर ये बताइए, अब ये काफी अजीब लग रहा है मुझे कि कंपैशन और मुदिता जो है वो अलग हैं विद इन occasional. So इसका मतलब है कि you can have compassion and mudita but have no panya, is it? Yeah, sense of self. Yeah, and I should practice compassion. It is not a natural outpouring of pure mind. It's coming from sense of self. देखो कितने दुखी हैं, मैं सक्षम हूँ इनको सब इनकी सहायता करने में, let me do that. So the sense of self can always operate. तो तिकपठान में भी हमने सुना था ना कि कुशलो धम्मो अकुशलस्य धम्मस्य उपनिषय पच्चे न पच्चे. इसी तरह से राइट स्पीच भी उसमें है, राइट एक्शन भी उसमें है, तो यू कैन हैव राइट स्पीच एंड येट बी totally deluded. Deluded, yeah. Right speech can be enforced by conventions, by being belonging to an organization where it is a prerequisite, but that doesn't make you panyavada. So that's another issue where we should not judge via external behavior, because external behavior can be one way and there may be no pragya. That's what this that's what the Dhamma clearly posits. और solution of the mind आएगा ना सर? very radical if you read it carefully. बहुत गड़बड़ कर दिया यार आपने. Very radical statements are there. भंते जी आप कहाँ से पढ़ रहे हैं ये इन्होंने भेजा था ना अभिधम्म में शुरू में. ठीक. So sir, in what Bhanteji was talking about, उसमें volition of the mind will come, right? Like what, like when you're practicing or when you have a speech, like, you know, because you might just tend to speak sweetly, but probably doesn't mean that like your intention is good. Yeah, certainly. That is another additional fact. You may speak
You may kind of pretend. Pretension बहुत होती है. Pretend is the right word, correct. And then when it puts non-greed and non-hatred as a universal. Yeah. If they are not present, then it is an unwholesome mental state. Oh, okay, that way. Okay. So Because अभी हम वहाँ नहीं हैं. If you see the unwholesome mental states, there, one of them will be there. Universal में धरसम, unwholesome universal में Lobha. Delusion is the main one, और फिर Yeah. shamelessness वगैरह, वो तो क्या ठीक है. So because lobha and dosa cannot exist together, but alobha and adosa can exist together. Oh, right. Greed and hatred cannot exist together. Right. Okay. So that's such a fine distinction done, you know. So we have to appreciate that point. Anyway, so from the point of view of this discussion, the real issue is कि आपका जो बाहरी एक्शन है वो बहुत अच्छा हो सकता है इन वन सेंस, जैसे भी हम अच्छा डिफाइन करते हैं, लेकिन वो प्रज्ञापूर्वक है और वो हमें ट्रांसेंडेंस की तरफ ले जा रहा है, ये जरूरी नहीं. दैट्स द शॉकिंग थिंग ऑफ दिस होल थिंग. Yeah, very true, of course. You may be motivated by compassion, you may be motivated by generosity, you may be motivated by metta. Adosa is metta. And yet, panya may be missing. So that's why the importance of this Nekhamasitani, Domanasthani, and Somanasthani. It is putting a special category in our mind, that which will lead to liberation. Yes, Aditi? नमस्ते सर. सर मैंने जैसे सुना है कि मेरे टीचर जो आचार्य बुद्ध रखिता थे, he used to always tell कि you have to cultivate punya for your uplift, कि जो भी हम कर रहे हैं. जी. तो is does help to our progress in Dhamma. Of course. Even he used to give examples. It creates conditions for us so that we can practice Dhamma better. पुण्य के मतलब आता है ना, त्याग आता है, जेनरोसिटी, दान की पारमी आती है, तो पारमियों में गिना जाएगा. But parmis themselves don't liberate. Yeah, but you should cultivate the thing, right? So you keep on doing it. It's like, out of the parmis, those which liberate are panya. Yeah. So you should work along with that. Means lifting yourself. If one develops panya, everything else will follow. Yeah, naturally it comes. It's no need of. So till such time as panya is not developed fully, we actually practice them. जैसे हम में मैत्री का भाव पूरी तरह शुद्ध नहीं है, लेकिन हम फिर भी मैत्री का अभ्यास करते हैं ताकि उससे चित्त शुद्ध हो जाए. टेम्परेरली ही सही, अच्छा तो है ना, बुरे अशुद्ध चित्त से तो शुद्ध चित्त हर हालत में अच्छा ही है ना. So we practice that. So it is a practice, but ultimately it becomes a natural state of mind. है ना? When the panya is developed, compassion, ये ब्रह्म विहार हैं, they become natural. ब्रह्म विहार इसीलिए कहा जाता है, they are the characteristics of the beings abiding in the Brahma realm, which means they have practiced these, they have purified the mind, freedom from all greed, hatred. And the whole thing is जैसे कि जो 10 पारमिता पूरी करना है, is the same thing. मतलब अब कोई भी सुत्ता में जाओ, it leads to the same liberation. Yeah, but how are you going to develop panya? It's the same. मतलब जैसे कि अनिच्छा, दुक्खा, अनत्था, वही देखना है. See, सारे सुत्ता में वही है. जी, और अनिच्छा कहाँ देखना है? अनिच्छा, seeing the suffering. देखो, जो मतलब अनिच्छा अभी देखना है, here and now. कहाँ पे? Here and now. नहीं, what does it mean here and now? What does it mean? Here and now. See, here and now in the sense कि देखो कि अनिच्छा of what?
anicca of it can be anything, your mental state or physically you're talking or you're watching. It has to be everything, not anything. Yeah, you can only contemplate on one thing. It's not all. Yeah, that's okay. We can't do it at all. But when we practice in our daily life, we have come across everything. We have 5 khandas. So we have to develop these trilakhanas with respect to all the 5 khandas. Okay, right. That's it. Yeah. Then our panya will be established. Sati Pathan will be established. Okay, panya will get established. As Sati gets established, then we move towards all the khandas and we see their impermanence, see their impersonality, see their unsatisfactoriness, and then it leads to development of nibbida, that leads to development of dispassion, that leads to development of freedom. Okay, so that is the path in very brief nutshell. Yeah, that's what we're trying to do. Okay. Prasad, let me just read something that you have read to us a few times earlier in some other context. So this is again from the sutta. And Bhagavan is saying he regards whatever phenomena there are connected with form, feeling, perception, fabrications, and consciousness, that is the 5 khandas, as inconstant, stressful, a disease, a cancer, an arrow, painful, an affliction, alien, a disintegration, an emptiness, not self. So the point I'm trying to make is that maybe when you are experiencing something with one of these other attributes that is mentioned here, you may not be very consciously aware of the fact that the inconstancy and stressfulness or dukkha is part of it. But nevertheless, you can have that feeling at the back. I think that can happen, isn't it? I'm not sure really, because I have heard people say that. But the way Buddha teaches us, he's always talking of how does one experience anatta? There's no way one can experience anatta. We actually infer on the basis of the whole practice. How does one practice anatta? One sees the atta arising and denies its reality and sees it as a ghost or whatever you want to call it, because it is impermanent, it is not within my control, and it is of the nature of suffering. So it cannot be my true nature. So you can see in every sutta these things will be there. That's why the formula of netad mam, neso amasmi, nemeso attati. Netad mam is the issue, it's not mine. So there is a sense of conceit. And then there is a sense of craving. Then there is this I am not, this is conceit, and this is not myself, this is ditti. So you have all these things are all interlinked. They are all associated with ultimately the removal of the fundamental delusions, which are removed by anicca, dukkha, and anatta. Whether one can directly get anicca without getting anicca, I'm not really sure. I don't think so. But maybe some people I've heard. You're not the first who said so. So I've heard people say so, but I can't understand how it is. I must confess. मुझे तो यही लगता है कि उसका आधार अनित्य बोध ही है. अनित्य बोध के आधार पे ही दुख बोध जागेगा, क्योंकि नहीं तो अनित्य बोध का आधार नहीं होगा तो दुख बोध नहीं जागेगा, क्योंकि सुख का अनुभव तो हो ही रहा है ना, विपरिणाम दुख है ना. और चीजें अनित्य हैं इसीलिए तो वो मेरे कंट्रोल में नहीं है ना, विपरिणाम है. तो तब मैं कहूंगा कि मेरी सेंस कंट्रोल में नहीं है, और क्योंकि वो दुख देती है. जैसे अनंत लखन सत्ता में भगवान क्लियरली स्पेल आउट करते हैं ना ये, and in so many other suttas he spells out, and the path is laid in that direction. Every other effort ultimately leads to nibbida, leads to dispassion, viraga, nirodha, and so on. So what you're saying is, in every experience, we should be able to see this explicitly. We should have the clarity and understanding of that, isn't it? Because intellectually we do understand, but experientially, whether it happens in every experience of that kind,
That's a more difficult thing for us to appreciate, perhaps. Is it really? I'm not sure. I thought anicca was the easiest to I mean, unless experience. you're very, very mindful, perhaps if you're very mindful, you may be able to see it. Sati ka bhi role hoga isme. Yeah, that is true, of course. But actually, if we pause a bit, you'll notice anicca is absolutely evident, straightforward. Man has just calm down a bit and look at the experience. If you calm down, you can see. But Yeah. on the spur, those prerequisites are there. You're right. Yeah, those prerequisites are there. That is undeniable. Yes, sir. Okay. हाँ जी, शर्मा जी. सर, आज बहुत अच्छी तरह समझ आया. इसमें थोड़ा सा मेरे को ये कहना था कि पन्या के डेवलपमेंट होने के बाद में, पन्या के डेवलप होने के बाद में तो बाकी कुछ बचता ही नहीं है, सब कुछ अपने आप ही ठीक होता चला जाएगा. एक बात. दूसरा छोटा सा प्रश्न ये है कि पन्या क्या इवेंट वाइज डेवलप होती है? मेरे ख्याल से इवेंट वाइज डेवलप नहीं होती. जैसे मैंने कुछ दान दे दिया या कुछ और हो गया, तो पन्या हैज टू बी डेवलप्ड एज ए होल, जैसे मैं सोचता हूँ. और तीसरा ये था, क्या जो मॉन्क्स हैं उनके लिए तो पन्या आसान है डेवलप करना, हम लोगों के लिए कहाँ तक संभव होगा, ग्रस्तों के लिए? मॉन्क्स के लिए क्यों आसान है? भाई उनमें क्या खास बात है? कपड़े बदलने से प्रक्रिया ऐसी चीज थोड़ा ना बढ़ती है. सॉरी बनते जी, सॉरी. I'm sorry. I shook my head before you started answering also. I held my head like this before you started answering. I mean, I wish it were so, you know, but we struggle more than most people. Carry on, Darshan. Yeah, ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा I can assure you. Kindly don't give up hope. नहीं तो हमारा क्या होगा? ऐसा कुछ भी नहीं है. नहीं सर, प्रज्ञा के जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, it has to be a gradual development. It can't be. Yeah. I mean, leaving aside exceptional people like Bhaiya and others, it has to be graduated path. Buddha's standard teaching is it is a gradual path, graduated path. Slowly we develop. वो तो दान से शुरू करते हैं, दान, शील, भावना. फिर भावना में भी we develop in one by one. And so it's a process which we have to follow. It's a path which we have to follow. तो वही हम कोशिश कर रहे हैं, अपनी अपनी तरह समझ से कोशिश कर रहे हैं. सतीपट्ठान अपना एक तरीका है, ये 5 खंड एक तरीका है, 6 आयतन दूसरा तरीका. But they all converge. They are all same actually. Different. They're kind of different templates. You know, Bhikkhu Bodhi is a nice word. They are different templates to look at the same phenomena, the same kind of a esoteric concept like nirvana. How do you reach there? So there are different ways of describing the path, which ultimately converges. Ultimately, all paths will converge from that nibbida onwards. How do you reach to nibbida? You can have different tracks of doing it. And depending on जैसे मेरे संस्कार हैं, उसके हिसाब से मुझे कुछ काम करना पड़ेगा. कौन सी प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी, वो मेरे अपने संस्कारों के, जो मेरे लेटेंट टेंडेंसी स्ट्रांग है, उसके हिसाब से मुझे करनी पड़ेगी. तो इसलिए वो पूरा एक सिस्टमेटिक एजुकेशन प्रोग्राम है. जैसे हमारा जान जैसा बहुत बढ़िया कहते हैं ना, इट्स ए प्रोग्राम एजुकेटेड प्रोग्राम, systematic education program. So we have to undergo that education.